Very good evening to one and all. Welcome to the fifth day of this one-week virtual faculty development program come workshop on research methodology and AI integration, redefining academic research excellence. We are sorry for today due to some technical glitch. We have started a little bit late. Just So on behalf of the INSPIRA Research Association, the KCECS College of Engineering and Management, Jalgaon, and Shri Tagore College, Kuchaman City. First of all, I welcome our today's eminent keynote speaker, Mr. Alok Mishra from Indian Patent Office, Government of India, Delhi. Sir, first of all, we are very thankful to you. You have spared your valuable time for this session. And sir, nowadays the importance of patent has become very high for the academicians because we get the API numbers from these patents, and we still don't know how to apply ourselves. We still search the peoples to apply for from our side, and we will pay to that person uh, for that patent. So I believe we will learn a lot from this session from Mr. Alok Mishra sir. And but before I invite Mr. Alok Mishra to start the session, I would like to request once again Dr. Aarti Chopra, Joint Secretary, Inspire Research Association, to invite and welcome Mr. Alok Mishra. Dr. Aarti. Can I start, sir? A very good evening. Sir, just a minute, sir. I'll formally introduce you and then we can start. So, a very good evening to one and all. Namaskar. It gives me immense pleasure to welcome all of you once again on the day 5 of this ongoing one-week faculty development program come workshop on research methodology and AI integration, redefining academic research excellence, being organized from 26th of May to 1st of June. So, as all of you know, as Ravi sir has just told, that this is a collaborative effort between INSPIRA Research Association and the collaborators that are Shri Tagore College, Kuchaman City, and KCES College, Jalgaon, Maharashtra. And today we are honored to have Mr. Alok Mishra with us today as our esteemed resource person. Sir is an Assistant Controller of Patents and Design, Indian Patent Office, Government of India, Delhi. And as Professor Modi has absolutely right in saying that patents are very important for faculty members and researchers to protect their innovative research and also enhance their academic reputation. But it seems to be a very, very tedious thing to plan an idea, then to plan a design, then to file a patent. And sir is absolutely right that when we do not know anything that how to navigate, we look for the agencies who charge hefty money from us to file the patent. So I'm sure with today's session, Mr. Alok Mishra sir will navigate us how to go about it. So sir is Group A Gazetted 1 officer. Sir has also 7 years of experience as an examiner of patent and designs. Sir is the in charge of grant patents filed by individuals and businesses at Indian Patent Office from both India and foreign countries. Sir also works as an officer for the Government of India's National Intellectual Property Awareness Mission. Sir has hosted over 200 IPR awareness sessions and workshops in many prestigious institutions, colleges, and universities. And Sir has trained more than 50,000 students and faculty members on this topic across India. So, Sir, we welcome you once again, and I'm sure that with your navigation, we'll get to learn a lot of things about patent filing today. Welcome, sir. Welcome, Mr. Alok. Welcome. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. And good evening, all of you, for inviting me at this session of intellectual property rights and patent application filing procedures. I am very much thankful to everyone for inviting me in this session.
I'm just sharing a presentation, a PPT right now here. Please check, sir. It is visible. Sir, yes, sir. Please share, sir. Yes, sir. It is coming, sir. It is coming. It is taking time, I think, sir. Yes, sir. That is taking time. I think due to some speed, net issue or connectivity, maybe. Before that, I'm just starting with the other things. Our Control General of Patent Design and Trademark quotes in the knowledge economy, intellectual property is the currency of the innovation ecosystem. And I believe that everyone present at this national workshop is a part of our knowledge economy in one way or another. And together we will leverage intellectual property to boost our innovation ecosystem, and that will turn help to strengthen our economy. And basically, the principal goal of the education is to create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done, and men who are creative, inventive, and discoverers. So, to contribute towards basically building an Atmanirbhar Bharat, the Government of India's initiative of Azadi Ka Amrit Mahotsav, under which the National Intellectual Property Awareness Mission, that is called as the NEPAM, was launched by the Department for the Promotion of Industry and Internal Trade of the Ministry of Commerce and Industry, and wherein more than 2 million, around 20 lakh students have imparted awareness on different aspects of intellectual property across the nation within last 3 years. And the main aim of this initiative is to inculcate the spirit of creativity, innovation to students of higher education, and ignite and inspire the students of college, universities to innovate and protect their creations, in which intellectual property basically nurtures and encourages innovation and creativity, thereby contributing towards cultural and economic development of the society. IP जो intellectual property है, that is a multifaceted tool, and that is, for instance, that provides encouragement to inventors, authors, artists. It brings sustainability to the cycle of research development. It grants protection to the businesses against unauthorized use of their goodwill. It also contributes towards poverty alleviation of craftsmen, handicraftsmen who are grassroots geographical indication authorized users. So basically, IP is a very effective tool in achieving Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. And in view thereof, the Office of the CGPDTM has formulated this mission, which is the National Intellectual Property Awareness Mission, that will be undertaken under the government initiative of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So I'm just pausing I think there is a problem in the sharing of the video. So I will pause my video. Maybe. Sir, you can please share again the PPT. I will stop. Yes, sir. I don't know why it is not coming. Just try again, sir. Maybe. Yes, sir. Yes. Okay. We can see that. You can make it a slideshow, sir. We can see now. That is, it is visible? Yes, sir. It is visible. You can make it a bigger screen, sir. It is on bigger screen, right? Now it is on bigger screen. Okay. So first of all, what is intellectual property? So as we know that economic activity that is very important in any country for its further development, economical development, the economic activity that is very important, and that is driven by the invention and innovation in that country, that is by the manufacturers or the companies. Okay, so each product that is the outcome of the several inventions, and further we will see it. And when we are paying for a product, so generally a part of the payment that is generally goes to the person who had invented that product, that kind of the जो भी innovation हुआ है,
तो दैट द पार्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट का है दैट विल बी, जो उसका जो पेमेंट है दैट विल बी गिवन टू द इन्वेंटर इन द फॉर्म ऑफ द रॉयल्टीज. So from an economy angle, that is the very important, and that is the deciding factor of the progress of any country. Okay, so first of all we should know about the property. So we have several kind of property like the immovable property, जिसे हम बोलते हैं अचल संपत्ति, like our house, our land, our shop, our flat. Okay, second is the movable property like car, bike, gold, jewelry, and third is the basically the intellectual property, that is see these many examples like any kind of book, any kind of the softwares, any kind of the machines, any kind of the technology, or any kind of the design. And in a single product we will see different kind of the intellectual property. Okay, so we have different properties, and first of all we should know that if we are just purchasing any property, then only after the registration process, that property comes on our own name. वो जो प्रॉपर्टी है वो जैसे कि आपने उसको बाई करने के बाद until unless, जब तक कि उसको आपने रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कराया from the registrar office. For example, if you are purchasing your land, any kind of the land or flat or house, then first of all you will go to the registrar office for the registration purpose, and जो भी seller है वो आपके नाम पर उसको क्या है कि आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन करेगा, और वो कहाँ से होकर जो है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस. एंड वन थिंग इज जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट in the case of the immovable property like the land or shop or flat, and in the case of the movable property like bike or car, the registration that is done by the registrar office and that is done from the state government. But in the case of the intellectual property, if you are creating any kind of the intellectual property just by using your brain, your intellect, your mind, your creativity, then you will also go to the registrar office for the registration purpose of that intellectual, जो भी आपने जो create किया हुआ है उसको आपको अपने नाम पे registration कराना है, but that will be done from the central government, not by the state government. That is very important. And only after the registration process from the registrar office, that property will be on your own name, and further you can use that property for the purchasing, for the selling, for the renting, for any other kind of the purpose. जैसे कि हमने फ्लैट का यूज करते हैं, सेम वैसे ही you can also use intellectual property for further any kind of the income. So in the area of intellectual property, that is basically जो worldwide जो intellectual property है, that is governed by the World Intellectual Property Organization, that is known as the WIPO. That is and its head office that is in Switzerland, in Geneva. As per the WIPO, the intellectual property, basically what is intellectual property? So it refers to the creation of the mind, like the invention, like the literary, any kind of the artistic work, any kind of the symbols, names, images, designs, that may be used in the commercial purpose, that will be used for the industrial purpose, for the commercial activities. So that is basically the intellectual property, like any kind of inventions, any kind of the literary books, okay, any kind of the artistic, further we will see it, works, any kind of the symbols, names, these are the part of the trademarks, images, designs. So these are the, and that should be for the commercial purpose. So intellectual property, that is a simple sense, that is a creation of human intelligence or mind. Okay, so as a form of the property right, intellectual property can be considered as an asset that can be bought, sold, and one second. So intellectual property that can be bought, that can be sold, mortgaged. Slides are not moving, sir. Yes. Please move the slides, sir. Only we can see only the first slide. Okay. The main slide. One second. Yeah. Yes, sir. Now we can see. Visible? Yeah, this is okay, visible intellectual property. Yeah. Yes. So here it is. As per the World Intellectual Property Organization, that is the head of all intellectual property. जो भी countries के जो भी laws बनते हैं, that will be governed by the World Intellectual Property Organization of the ये United Nations का एक part है, उसका एक branch है, WIPO. So as per the WIPO, intellectual property refers to the creation of the mind, for example, inventions,
in the form of the technology, machines, any kind of the literary, any kind of the artistic work, symbols, names, images, and designs that will be used for the commercial purpose. Okay. So now we can see six kind of intellectual property. So we have patents, we have designs, we have trademarks, copyrights, geographical indications, and SICLD, that is known as the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design. So patent basically जो first जो intellectual property है, that is the patent. So the patent will come for the any kind of the invention in the field of technology. In the case of the research and development, in the case of any kind of machine, any kind of the medicines, any kind of the mixture, any kind of the chemicals that will be जो भी जिसमें भी कोई आपने ऐसा invention किया हुआ है, in that case we will go for the patent. Further we will see. Second is the design. Design basically क्या है? If you are changing the aesthetical aspect of any kind of the product, उसका जो बाहर का जो external जो part है, उसके pattern में, उसके design में, उसके shape में, उसके जो भी उसका जो 2 dimensional या फिर 3 dimensional उसका जो भी बाहर का उसका जो भी एक shape है, उसमें if you are changing any kind of thing in the whole उसका जो outer shape है, that will come under the design kind of intellectual property. Third is the trademark. Trademark basically क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो भी लोगो है, उसका जो भी नेम है, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो और द कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, दैट इज फॉर द उसका जो फर्दर कोई मिसयूज नहीं करने पाए, दैट्स व्हाई कंपनीज गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर नेम और लोगोज, बेसिकली दैट इज फॉर द ट्रेडमार्क पर्पस. Fourth one is the copyright. Copyright comes under for basically the artistic work as well as for the literary work, like any book, like any kind of the art, any kind of music, any kind of drama, any kind of the movies, any kind of the softwares. इसमें softwares का भी parts आते हैं इसमें. And next one is the geographical indications like the GIs. GIs basically that covers in India and in other countries also. There are various products that are basically manufactured in any region of the country. So to basically recognize that product that come from any specific region, and to just basically support the handicraftsmen who are just manufacturing that product. That's why government is providing the GI tag to these products for the recognition of these products at country level as well as at the world level, at global level. That's why they will increase the basically employment as well as local level of the economy. That will boost the local economy as well as employment at the local level. When they will be basically उसका एक आपको फेम करना है, उसको सेल करना है, जिससे कि क्या है कि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल पाए. And last one is the semiconductor integrated circuit layout design. These are basically used in the electronic जो products होते हैं, like the laptop, like the phone, उसमें कुछ circuit form होते हैं. Circuits का जो layout design होता है, that is also the intellectual property. So we have 6 kind of intellectual property which are protected in our country. These are this: patents, design, trademarks, copyright, GIs, and SICLD. Now from the single product of the laptop, we can see various kind of intellectual property in a single product. So you can see here there is a laptop, and laptop has various kind of the technological things that is present in this laptop, like the LED display, like the processor, like the chip, which are present in this laptop. So any kind of the technological advancement that is a part of the research and development, any kind of the machine or technology that is present in this laptop, in this product, that will come under the patent kind of intellectual property. In that case, if you are going for the inventions or innovation for any kind of the technology kind of thing in this laptop, then that part will be covered under the patent. Okay, in that case you will file for the patent kind of intellectual property. Second is the design. So any kind of the outer shape, any kind of the outer color pattern, or any kind of aesthetical aspect of this laptop, like the body of the laptop, that will be the part of the design aspect of the intellectual property. Okay. Now third is the who is the manufacturer of this laptop? How will you know that who is the manufacturer of this laptop? That will come from the brand name or the brand logo. So on this laptop, you can see the brand logo of the company who is manufacturing it. So you can see here Apple sign, that is the logo of the Apple company, means Apple company has manufactured this product. So that is the trademark of the Apple company. Okay, that is the third IP that is present in this laptop. Fourth one is the
user manual. So user manual that will come with this laptop or with this product, that is for the how will you use this product. So that is basically a kind of the written document. Okay, so any kind of the written document that will be the part of the copyright, like the literary work, that is the kind of literary work. So copyright, that is the part of copyright. Now fifth one is the layout of the IC. When you will open this laptop, then you will see a kind of the integrated circuit. Okay, that is the semiconductor integrated circuit, and its layout design, that is also a kind of the intellectual property. So in a single product you can see here 5 different kind of the intellectual property in a single product, and which are patent, design, trademark, copyright, and associational design. Okay, now next one is how will you create the intellectual property. So for the creation of any kind of the intellectual property, you require 3 things. First is the resources, second is your brain or your creativity, and third is the labor, the work that will be done. So in the case of resources, means आपको resources क्या क्या आपको required है, जो कि मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा इन्वेंशन क्रिएट करना है, सो फॉर द इन्वेंशन यू रिक्वायर डिफरेंट मशीन्स, और जो भी उसमें जो भी प्रोडक्ट जो आपको लगने हैं जिसको यूज करके यू विल क्रिएट अ डिफरेंट प्रोडक्ट. सो दीज आर द रिसोर्सेज. ओके, सेकेंड इज द ब्रेन. ब्रेन मीन्स योर इंटेलेक्ट, योर नॉलेज, योर क्रिएटिविटी. आपको जो डिफरेंट करना है, जो आपके दिमाग में है कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो दैट इज योर ब्रेन और योर इंटेलेक्ट और योर क्रिएटिविटी. एंड थर्ड इज योर वर्क, योर लेबर. So when you will combine all these 3 things to create any kind of the intellectual property, so you will create a property by using your intellect. So that is the thing that will be created by your brain or your creativity or your intellect. That is the intellectual property. Okay, so now the main thing is the importance and significance. What is the importance and what is its significance? So first of all, you should know that if you are going for the intellectual property, then first and foremost thing, that is the protection. Protection means if you are getting any kind of the idea for the intellectual property. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि आई एम क्रिएटिंग, और मुझे ऐसा आइडिया आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन आवर लोकल लेवल, at our local level we can see different kind of the जुगाड़ टेक्नोलॉजी. मीन्स क्या होता है कि हमने ऐसा देखा हुआ है कि लोगों ने कुछ एक मशीन यूज किया, कुछ सेकंड मशीन को हमने लिया और आपस में हमने कुछ कंबाइन करके ऐसा है कुछ थर्ड हमने मशीन बना दिया. एंड दैट इज जो मशीन है उसका यूज जो आपका यूज है बेसिकली वो है क्या कि किसी न किसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है. तो बेसिकली क्या है कि आपने ऐसा मशीन आपने क्रिएट किया, और ऐसे फर्दर आपने और भी कुछ आपने क्रिएट किया होगा, लाइक एनी काइंड ऑफ द, आपने कोई बुक लिखा होगा, कोई आपने म्यूजिक बनाया, कोई आपने वीडियो बनाया, कोई भी आपने सॉन्ग क्रिएट किया. सो ऑल दीज आर वेरियस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बट मेन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोटेक्शन. तो करना क्या है कि एज अर्ली एज मीन्स क्या है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है कि मीन्स दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज क्रिएटेड बाय मी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट गो फॉर द प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मीन्स आपको इमीडिएट उसको जिस भी कैटेगरी में आता है, if that is the part of the patent, design, trademark, copyright और GI, आपको GI में बेसिकली नहीं जाना है, SICLD, तो जिसमें भी वो आता है उसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, मीन्स आपको जस्ट अप्लाई करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन. और जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, यू आर गेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ दैट आइडिया. एंड द पर्सन हु इज जस्ट अप्लाइंग as early as possible, the person who is applying, he will get the earliest priority date. तो जो भी पर्सन पहले अप्लाई करता है किसी आइडिया के लिए, पहले वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, दैट पर्सन विल गेट द अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट फॉर दैट काइंड ऑफ द आइडिया. और उससे क्या होता है कि आपके बाद में जो भी सेकंड पर्सन आपके जो आपका आइडिया है उसी सेम आइडिया पर इफ एनी अदर पर्सन इज गोइंग फॉर द registration purpose, then that person will be excluded, because the person who has the earliest priority date on that idea, further he will get the registration done on his name. तो करना क्या है कि first of all, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, you will not disclose that idea at any level, neither at the level of the YouTube और वीडियो, और मीन्स क्या है कि आपको कहीं पे भी किसी भी लेवल पे, चाहे तो पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर कोई पब्लिश जो आप लोग जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उसमें वहां पे हो गया, या फिर कोई भी वीडियो हो गया, कोई यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी उस आइडिया को पहले आपको पब्लिश नहीं करना है. मीन्स वो आपको कब तक करना है, जब तक कि आपने जो प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं किया, मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर दिया है. जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आफ्टर दैट
क्या होता है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपको एक एटलीस्ट प्रायोरिटी डेट मिल गया, आफ्टर दैट यू कैन ओपन योर जो भी आपका आइडियाज को आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया अपने नाम पे, रजिस्ट्रेशन का जो डेट आ गया, तो बाकी जो भी सभी लोग हैं दे आर एक्सक्लूडेड। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स कि आपको जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो फर्दर जो भी पेटेंट का प्रोसेस है या कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, आफ्टर दैट आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और उसके बाद में क्या है, हाउ यू विल यूटिलाइज, कॉमर्शलाइज एंड अर्न फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, अब वो हमको देखना है। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव वेरियस काइंड ऑफ द थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज द ओन यूज। मीन्स क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे वो मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नाउ फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी वी कैन गो फॉर द ओन यूज। तो उसमें बेसिकली क्या है, यू कैन मैन्युफैक्चर योरसेल्फ एंड यू कैन सेल, एंड जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब कुछ आपका अपना है। सेकंड इज द लाइसेंस और असाइन। बेसिकली ये क्या है कि जैसे हमने रेंटिंग करते हैं कि हमारा घर है, हमारा फ्लैट है, उसको हमने रेंट पे दे दिया, उससे हमको एक जो है कि हमको एक रेंटल इनकम क्रिएट हो गया। सेम वैसे ही आप किसी को जो लाइसेंस है, बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके नाम पे है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट आउट कर सकते हैं, उसको आप असाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि एक पेपर पर, जो स्टैम्प पेपर पे आप कुछ आपस में एक रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आप असाइन कर सकते हैं कि मीन्स क्या है कि एनुअली या फिर मंथली मुझे इतना इनकम मुझे रिक्वायर्ड है, इतना मीन्स क्या है इनकम मैं से जनरेट करूंगा। ठीक है। थर्ड इज द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी जैसे कि अगर आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो जो ट्रेडमार्क की जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका ब्रांड है, उस ब्रांड को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पार्ट्स में वहां पे फ्रेंचाइजी के फॉर्म में भी ओपन हो सकता है। दैट इज द फ्रेंचाइजी। फोर्थ वन इज द मर्चेंडाइज। मीन्स बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपने जो भी आपके प्रोडक्ट है उस पे आप सेल कर सकते हो, लाइक द अमेजन, लाइक द फ्लिपकार्ट, लाइक द डिज्नी, लाइक द बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपके जो यूट्यूब जो भी आपके वीडियोस हैं, आपके म्यूजिक्स हैं, वो भी सेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसका यूज करके यू कैन गो फॉर द यूटिलाइजेशन एज वेल एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Now, what is the use of this intellectual property for the common person as well as for the businessman? For the common person, that is the means if you are getting the registration of any kind of the intellectual property on your own name, so that is the matter of the respect, great respect as well as pride in the society. Along with that, in the field of the academics, if you are applying for any kind of job, okay, or for the PhD or for MTech, if you have any kind of the intellectual property that is registered on your name, so in that case that is very much beneficial for the academics purpose. Along with that, in the case of the businessman, the intellectual property that is very important for the commercialization of the product of that company, along with that for the brand value, to increase the brand value of the product, as well as for the earning and investment further of that company, that is very very important for the businessman. Now we are coming for the patent. So first is the first intellectual property, that is the patent. So basically what is the patent? So patent basically that is a kind of the exclusive right, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक विशेषाधिकार है, एक विशेष अधिकार मिल रहा है, and but that is given by the country, means that is given by the central government, not by the state government. That will be given by the country. और किसको मिलने वाला है? To the owner of the invention. Who is the owner of the invention? और किस पर्पज के लिए? To manufacture the invention, to use the invention, to make the invention, to market the invention, and for the limited period of time. There is the मीन्स जैसे कि जो प्रोडक्ट, जैसे आपका मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है, आपका घर है, वो आपके लाइफ टाइम के लिए होता है। बट इन द केस ऑफ द पेटेंट, द जो पीरियड होता है जिसके लिए आपको जो अधिकार आपको मिला हुआ है, दैट इज फॉर द लिमिटेड पीरियड, एंड दैट इज 20 years. In the case of patent, that is 20 years. Earlier that was lesser, but right now that is increased to 20 years. Now, right to exclude others from using your invention. जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, means you are just excluding others from using your invention. So complete right that is only with the inventor, means the owner has the qualified right to use the invention. Complete right जो किसके पास में? ओनर के पास में qualified right है, and all others are excluded from using your invention. That is very important. Now, what are the criteria for obtaining patent? So for the to get the patent, we should know that any invention, okay, जो invention होगा, that is either for the product. कोई आपने मशीन बनाया तो एज ए मशीन को आपने कुछ पूरा मशीन आपने जो बनाया हुआ है, मशीन का कुछ आपने पार्ट बनाया हुआ है, या फिर आपने जो टोटल मशीन बनाया तो एज ए प्रोडक्ट को मिलने वाला है। अदरवाइज दैट विल बी गिवन फॉर द प्रोसेस, उस मशीन को डेवलप करने का, या फिर कोई आपने अगर मेडिसिन क्रिएट किया है तो मेडिसिन को बनाने का, या फिर जो मेडिसिन को एज ए प्रोडक्ट बनाने का, जो भी उसका या तो प्रोसेस को मिलेगा या तो प्रोडक्ट को मिलेगा, या फिर दोनों को मिलता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसी थ्योरी को नहीं मिलेगा,
ठीक है ना, बट किसी प्रोडक्ट को मिलेगा, किसी प्रोसेस को मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को नहीं मिलता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को नहीं मिलता है। और फर्दर वी विल सी दैट कि क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द पेटेंट। नाउ देयर आर 3 very important conditions for the invention which will be patented. So first condition that is very important, that is the novelty. Novelty means newness, means your product or your process that should have new feature. ऐसे फीचर होने चाहिए जो कि अभी तक मार्केट में either in the online form or in the offline form या फिर कहीं पे भी किसी बुक में, किसी किताब में, कहीं पे भी वो मेंशन नहीं है, कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि आपने कहीं से कॉपी किया हो। तो और वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड हमारे पास में क्या होता है कि डेटाबेस होता है सॉफ्टवेयर के, जहां से हम इसको चेक करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस है, वो वर्ल्ड वाइड कहीं और से कॉपी तो नहीं किया गया है। ये सब कुछ आपको नया होना चाहिए, मींस दैट शुड बी नॉवेल, और इसमें एक न्यूनेस होना चाहिए। सेकंड इज द इन्वेंटिव स्टेप, मीन द प्रोडक्ट और प्रोसेस that should have the technical advantage over the existing technology. For example, इसके meaning basically क्या है? For example, if any kind of the mobile phone that is manufactured by the Samsung as well as by the Apple company, तो दोनों के पास में फोन है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि सैमसंग ने कुछ ऐसा फीचर डेवलप किया, कुछ एक मीन्स क्या है कि ऐसा फीचर जो डेवलप किया हुआ है जो कि अभी तक किसी या तो सैमसंग में भी या तो एप्पल में भी जो अब तक पेटेंट नहीं हुआ था, कुछ ऐसा आपने फीचर जो क्रिएट किया हुआ है, जो आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, सो ऑन दैट इन्वेंटिव स्टेप जो कि आपने अभी अभी जो क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि कैमरा पहले से लगा हुआ है, कीबोर्ड पहले से, या फिर कुछ और भी जो मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं वो पहले से हैं, उससे पेटेंट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज अर्लियर पेटेंटेड। बट राइट नाउ आपने नया क्या किया है जो कि पहले नहीं था, विच आर द इन्वेंटिव स्टेप that is having the technical advantage over the existing technology, that is the inventive step. So on that inventive step you will get the means क्या है कि on that inventive step you will claim the patent, means आप पेटेंट के लिए वहां पे क्लेम करोगे कि आपने क्या नया क्रिएट किया है। ओके, नाउ थर्ड इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, that is very important, means if you are creating any kind of the innovative thing, but that is, if that is not beneficial for the industry, means for the commercial purpose, then that is the not part of the patent, because patent means जो intellectual property है वो वही property होगा जो कि commercial things में जिसका use हो पाए। So if that is not industrially applicable, then that product will not get the patent. Okay, so these are 3 criteria which are the novelty, inventive step and industrial applicability for getting the patent. Now under section 3 and 4 of the Indian Patent Act 1970, there are several things which cannot be patented, like we have few things here. First one is the frivolous and contradicting well-established law. If any law like the Newton's law, like the थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जो लॉज हैं लाइक द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो ऐसे जो भी लॉज हैं जो कि यूनिक लॉज हैं, जो कि अगर सो इफ यू आर क्रिएटिंग और यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग व्हिच आर फ्रिवोलस टू दिस वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ, देन दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने कुछ ऐसा क्लेम भी किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन, PMP, ओके, उस केस में आप ये क्लेम करते हैं कि विदाउट द लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी, मींस क्या है कि आपने इनपुट किया और जो आउटपुट किया उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल डैम से वाटर नीचे जा रहा है, फिर वही वाटर क्या है कि डैम का जो लेवल है, वाटर का जो फर्स्ट लेवल था वहां तक लेवल पे आपने विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसको आप अपलिफ्ट कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन हाउ दैट कैन बी पॉसिबल, because that is the perpetual motion machine kind of thing, but that cannot be patented, because अगर आपने कुछ ऐसा claim भी किया, in that case we will demand for the any kind of basically that is known as the, you can say उसका एक बाई प्रोडक्ट, मीन्स क्या है कि छोटा सा एक आप उसका बाई प्रोडक्ट लाइए कि आप यहाँ पे शो करिए कि कैसे ये पॉसिबल है कि मीन्स क्या कहते हैं कि जो आपने क्लेम किया हुआ है दैट इज अगेंस्ट द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा अलोंग विद योर प्रोडक्ट, मीन्स क्या कहते हैं कि यू आर क्रिएटिंग, यू आर इनोवेटिंग, बट हाउ दैट इज अगेंस्ट द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ, तो वो आपको प्रूव करना पड़ता है। सो दैट विल नॉट बी पेटेंटेड बेसिकली। सो सेकंड इज द इन्वेंशन अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया, कुछ आपने ऐसा बनाया जिससे कि किसी को मार दिया जाए, किसी का गला काट दिया जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है,
किसी का मर्डर करना है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा चीज जो कि पब्लिक ऑर्डर या फिर मोरलिटी या फिर लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में है, आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। आपने कुछ ऐसा बनाया कि स्मोकिंग के लिए बनाया, कुछ आपने ड्रिंक के लिए बनाया, बट दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ऑर्डर, so that cannot be patented। okay, third is the scientific principle and abstract theory। okay, so जो कि ऑलरेडी जो ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं जो कि ऑलरेडी बुक्स में रिटन है पहले से ही, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड बिकॉज दैट इज ऑलरेडी नोन। Next one is the discovery of a new form of the known substance which does not in the enhancement of the known efficacy। So already कोई अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मेडिसिन है, उसमें आपने थोड़ा सा कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि मैंने ये पार्ट ऐड किया हुआ है, नाउ देयर इज द न्यू मेडिसिन। बट इफ दैट जो नया जो प्रोडक्ट है, if the new form of the known substance which does not in the enhancement of the known efficacy, आपने उसमें कुछ ऐड किया, but after adding the new things, if that is not increasing the efficiency or efficacy of the प्रोडक्ट, जो अर्ली जो प्रोडक्ट था और जो नया जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ऐसा क्वालिटी में इनहांसमेंट ही नहीं हुआ, कुछ ऐसा इंक्रीज ही नहीं हुआ, देन दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। मेरे अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है उसको आपने जस्ट उसको ओपन करके आपने कोई स्टेप को 1 2 3 4 था उसको आपने 4 3 2 1 कर दिया, मींस आप अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड बिकॉज ऐसा कुछ आपने कुछ न्यू नहीं किया है, कोई ऐसा उसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कोई भी जो वेल नोन एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं, हॉर्टिकल्चर के मेथड है जो पहले से पता है, जो ऑलरेडी वेल नोन है फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम, that cannot be patented। Any kind of the diagnostic method in the in hospitals, okay, that cannot be patented। Any kind of the traditional knowledge like your in our country like yoga, like जैसे टर्मरिक है, बासमती राइस है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो ये फॉरेन कंट्रीज में इसमें क्लेम हुआ था, तो वहां पे क्या है कि इन इंडिया दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड बिकॉज दीज आर द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड दैट इज गिवन इन एनी बुक और इन एनी अदर काइंड ऑफ द ट्रेडिशनल थिंग्स। ओके, now we have the example of various inventors as well as inventions and scientists। So in India you already know about the Aryabhatta who had invented the zero, Sir C.V. Raman invented Raman effect, APJ Abdul Kalam, our ex-president, he was the he was also known as the missile man, and he was very important in the nuclear weapon as well as in the missile development of India। So along with that, Vinod Dham, who is also known as the father of the Pentium chip, who had developed the Intel Pentium chip। So there are various well-known name in India also, and along with that, the first time in India, when the patent kind of thing, the first time जो इंडिया में जो कि ऐसा first time जो claim हुआ था basically, that was in 1856, and that was by the George Alfred D. Penning, who was the civil engineer and who had developed an efficient Punga pulling machine in 1856। And for that machine, he had basically requested by the he had requested to the जो government था for the exclusive privilege जो privilege है means एक विशेषाधिकार है basically, that should be given to him for the means क्या है कि invention of this efficient पंखा pulling machine। So यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा जो picture दिख रहा होगा, that is the efficient पंखा pulling machine। So he had basically इन्होंने request किया था for the grant of the exclusive privilege like the patent for this machine that was invented by him। And along with that, we already know about various scientists and their inventions like the Thomas Alva Edison phonograph, Alexander Graham Bell telephone, Wright brothers aeroplane, Isaac Newton gravity, and there are various other examples। In case of India, we have few very famous Indian inventions like the nano car, vaccine, hepatitis vaccine, Jaipur food। So basically होता क्या है, when any company is investing large amount of money for the research and development purpose, then earlier क्या होता है कि within the 20-year period जो period होता है पेटेंट का, उसमें क्या होता है कि कंपनी जो होता है उसका जो रेट होता है, जो प्रोडक्ट है उसका रेट थोड़ा हाई रखता है बिकॉज ऑफ द पेटेंट। और क्या होता है कि उसने जो भी अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन द केस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो दे विल गेट द होल प्रॉफिट for the investment as well as उनका जो भी वर्क रहा हुआ है। and after the expiry of the patent period, that is the 20 years, now that technology जो टेक्नोलॉजी है, जो भी उसका जो मेथड है, now that will be available in the public domain after 20 years।
तो उससे क्या होता है, नाउ दैट टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप्ड बाय एनी कंपनी, एनी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी उसको जो है फर्दर डेवलप कर सकता है. दैट्स वाई दैट जो भी इन्वेंशन है दैट विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक, टू द होल मास at very cheap rate. That's why nano car was available at very cheap rate, around 1 lakh rupees. Vaccine at 40 cent, hepatitis vaccine, Jaipur food. So that is very much means क्या है कि that is the importance of the पेटेंट. बिकॉज जो पेटेंट का जो पीरियड है उसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो अपना जो भी उनका जो प्रॉफिट है दे विल गेट द प्रॉफिट उस पीरियड में, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड नाउ जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका जो क्रिएटिविटी है, दैट इज ओपन. जैसे कि आपको पता है जेनरिक मेडिसिन होती हैं, तो जो जेनरिक मेडिसिन है उनका जो भी उसका जो फॉर्मूला है नाउ दैट इज अवेलेबल टू द पब्लिक एट वेरी चीप रेट. सो दैट्स वाई जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं उसका रेट काफी कम होता है, बिकॉज नाउ वो जो भी रिसर्च है वो ओपन होकर के आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 years वो पब्लिक में आ चुका है. नाउ वी हैव एग्जांपल ऑफ पेटेंट्स लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटे बच्चे के लिए फॉर द बेबी देयर इज द आईज एंड ईयर प्रोटेक्टर है फॉर द बाथिंग के टाइम पे. सेकंड इज दैट इज द ब्रेसलेट. ओके, तो ये क्या जो इसका वर्क बेसिकली क्या है, दैट इज यूज फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ योर स्क्रीन, फोन स्क्रीन ऑन योर हैंड, एंड यू कैन यूज योर फोन इवन एट मीन्स क्या है कि अगर पानी में भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ और वर्क कर रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हैं. थर्ड इज नोन एज द स्क्वायर डिवाइस, दैट इज यूज फॉर द जो आपके जो कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, along with your phone you can use this square device for the payment purpose. And fourth one, that is the drone camera, that is very much used for the defense purpose. अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है इसमें तो पूरा ही यही यूज हुआ है ड्रोन कैमरा. that is also very much used right now in the tourism sector as well as in festivals, in marriage, wedding. तो आजकल हर जगह पे, and that is possible only जो है ड्यू टू द पेटेंट. तो पेटेंट बेसिकली होने के बाद क्या हुआ कि जो एक्सपायरी ऑफ 20 years के बाद में जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉमन इन द, वो ओपन हो गया in the whole mass. Now any company can go for the manufacturing of these products. So that's why basically क्या है कि these products are available at very cheap rate to the public. Okay, now patent application filing. What is the filing procedure of the patent application? So now we should know about this process. So want to file patent application in India, what to do, कैसे आपको करना है? So we have several forms like the form 1, form 2, form 3, form 5, form 18, and these forms which are up to form 31 up to 31, but all forms are not required at every time only. So these are very very important forms like the form 1, form 2, form 3, form 5 and form 18, which are very very important. So first of all you have to file the form 1. In form 1 you will have all information of the application जो भी रहेगा उसका इसमें complete detail रहेगा, like the what is the name of the applicant, what is the address of the applicant, उसका जो contact information क्या है, उसका email ID क्या है, who is the inventor, along with that what is the title of the invention, जो invention है उसका title क्या है, ठीक है ना, और क्या क्या pages हैं, कितने number of pages हैं, each and every जो details हैं, जो factual details हैं, these are the part of the form 1. Along with that जो आपने जो फी जो आपने पे किया हुआ है वो भी आगे आपने जो फर्दर जो आपने जो पेमेंट किया है वो भी फॉर्म 1 में मेंशन रहेगा. But there is no any separate fee of the form 1. Now coming to the form 2. Form 2 is having the complete detail of the invention. इसमें जो भी आपका जो invention है उसका complete detail के फॉर्म में कैसे, first is the title of the invention, what is the background of the invention, what is the drawings, क्या क्या drawings हैं, that will be the part of the form 2. And form 2 basically known as the specification document, that is known as the specification. और specification भी हमारे पास में दो टाइप का होता है, one is the provisional specification, second is the complete specification. तो लास्ट में क्या होता है कि आपको जो complete specification ही आपको फाइल करना होता है, that is very important. और provisional भी आप कभी कभी फाइल कर सकते हैं, for the we will see it. And third is the brief description of drawing. वो आप इसमें आपको मेंशन करना है in your specification जो भी form 2 में रहेगा. Brief description of the invention, your claim. आपको जो पेटेंट जो आपको ग्रांट होना है that will be on your claim. आपने क्लेम क्या किया है, किस पार्ट को आप कह रहे हैं कि जो कि इन्वेंटिव है, जो कि नॉवेल है, जिस पे आपने कुछ वर्क किया है, that will be claimed, and on that claim you will get the patent. Along with that you have to file the abstract and drawing. And in the case of the form 2 there is no any extra fees for the form 2 up to 30 pages.
up to 30 pages of the specification document, up to 30 pages of the form to document, and up to 10 claims. 10 claim अगर रहता है तो कोई extra fees नहीं है. But if you are increasing जो claim numbers हैं, if you are increasing your claim numbers, then for each claim you have to pay 800 rupees extra. For each page after 30 pages you have to pay 400 rupees extra. Okay, that is required. Now you have to file the form 3. In case of the form 3, basically that is filed for the, if you are filing your जो भी आपका application है in any other foreign country, in that case you have to give the information about that in form 3. Along with that, the form 5 that is required for the declaration to inventorship. If you have the applicant, different applicant and different inventors, means क्या है कि inventor कोई और है, applicant कोई और है, in that case you have to go for the filing of the form 5 declaration as to inventorship. There is no any separate fee of the form 5. Form 18, that is very important. Only after the filing of the form 18, the whole process of the examination of your patent application that will be started, and that shall be filed within 31 months from the earliest priority date. आपका जो filing date है वहां से 31 month के अंदर आप जो फॉर्म 18 है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का जो है वो आप फाइल कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है दैट विल बी डीम्ड टू विथड्रॉन, एंड देयर इज अ फी फॉर द फॉर्म 18. ओके, नाउ वी कैन सी हियर, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था. देयर इज अ फी ऑफ द फॉर्म 1, बट आपका फॉर्म 2 का कोई फीस नहीं होगा. तो यहाँ पे आते हैं, तो देयर इज अ फी ऑफ द फॉर्म 1. तो फॉर्म 1 का जो फी रहेगा दैट इज 1600 रुपीज, एंड फॉर द नेचुरल पर्सन or startup or MSME or for any education institutions for the college, the fee is 1600 rupees. For form 2, जैसे मैंने आपको बताया कि there is no any separate fee for up to 30 page and up to 10 claims for form 2. Form 3 no fee, form 5 no fee, and form 18 400 rupees. So जो total जो payment है that is only 5600 rupees for any patent application. For the larger companies that is 8000 rupees for the form 1 and 20,000 for the form 18. So total payment is 28,000 rupees. Okay. So these are the fee for the filing of the patent application. Now, what is the filing procedure? So for the filing, submission of the hard copy in the appropriate patent office. So we have 4 patent offices, one in Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. So you can go for the जो है physical filing. But right now there is no any requirement for the physical filing. आपको कहीं जाना नहीं है. Each and everything that is completely online. आपको करना क्या है कि you have to go at this website ipindiaonline.gov.in. आपको यहाँ पे जा करके अपना वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है. That is the site comprehensive filing portal. यहाँ पे आपको अपना आधार का यूज करके अपना जो आपका नेम रहेगा उसके साथ में एक रजिस्ट्रेशन करना है. एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्दर आपको इसमें जो भी फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 18, आपको ये सब यहाँ सबमिट करना है. एंड आफ्टर दैट आपको जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. नाउ देयर इज एक यहाँ पर बेनिफिट है, एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, एक अलग कैटेगरी है दैट इज नोन एज द एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है कि बेसिकली आपका जो होल प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा. मीन्स होता क्या है, आपने आज फाइल किया, फाइल करने के 18 मंथ के बाद में 18 महीने के बाद में क्या होता है कि जो पेटेंट का जो एप्लीकेशन जो आपका पेटेंट का डॉक्यूमेंट है दैट विल गेट पब्लिश्ड. 18 महीने के बाद वो पब्लिश होता है और फिर 18 महीने के बाद में जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. तो वो जो टाइम पीरियड है उसको बचने के लिए यू कैन गो फॉर द फाइलिंग अंडर द एक्सपेडिटेड कैटेगरी. इस कैटेगरी में कौन कौन अलाउड है ये हमको देखना है. So first one is the startup. Startups are allowed to file under the expedited category. इसमें क्या होता है कि अगर आपने जो एक्सपेक्ट कैटेगरी है इसमें अगर आपने फाइल किया हुआ है, इन दैट केस जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है अप टू द ग्रांट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन दैट विल बी वेरी फास्ट एंड यू विल गेट द पेटेंट विद इन 6 months, 4 months, 3 months. दैट मे बी पॉसिबल. अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ नॉवेल है, इन्वेंटिव है, इंडस्ट्री एप्लीकेबल है, देन आप क्या है कि बहुत जल्दी इसको आप जो ग्रांट का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है. तो इन द केस ऑफ एक्सपेडिटेड कैटेगरी, so first one is startups which are allowed. Second is a small entity like the micro, small, medium enterprises, MSME जैसे हम बोलते हैं, छोटी जो कंपनीज होती हैं. थर्ड इज एप्लीकेंट इज अ फीमेल. अगर कोई एप्लीकेंट है वो फीमेल है, वो अगर फाइल कर रही है सो दैट कैन फाइल इन अंडर द एक्सपेडिटेड कैटेगरी. बट अगर कोई मेल है और वो फीमेल के साथ में ज्वाइंट एप्लीकेशन के फॉर्म में फाइल करता है, मींस इफ द फीमेल इज द ज्वाइंट एप्लीकेंट with any natural person, then that is also allowed. तो अगर कोई female applicant joint applicant है, then they can also go for the filing under the expedited category. Next is the any kind of the department which are the government department. Okay, they can also file.
एनी इंडिया एज अ ISA कंट्री, ये फॉरेन कंट्री के जो फाइलिंग्स आती हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर पेटेंट ऑफिस। तो कोई भी अगर जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं अगर वो फाइल करते हैं तो वो भी एक्सपीडिएट कैटेगरी में फाइल कर सकते हैं, पर जो प्राइवेट कॉलेज है वो इस एक्सपीडिएट में फाइल नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग होता कैसे है? तो बेसिकली वी हैव थ्री काइंड ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, वन फर्स्ट एप्लीकेशन इज द PCT एप्लीकेशन, जो कि फॉरेन से आता है, जो PCT के अंडर में आता है, जो फॉरेन के थ्रू बेसिकली, तो फॉरेन के थ्रू एक हमारे पास PCT आता है और जो कन्वेंशन ट्रीटी के अंडर में आता है। सेकंड इज द कन्वेंशन एप्लीकेशन होता है, जो एक सेकंड कैटेगरी का होता है, और एक थर्ड होता है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। सो इन आवर केस, जो कि हमारे कंट्री का, अपने कंट्री का है, सो अगर आपको फाइल करना है देन यू विल गो फॉर द फाइलिंग अंडर द ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काफी हमको यहाँ फोकस करना है, वो क्या है? इन केस ऑफ द इंडियन एप्लीकेंट विच आर द ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, अगर आपका जो वर्क है, इफ दैट वर्क ऑफ द, जो भी आपका रिसर्च है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आपको लगता है कि मुझे अगर मैं जल्दी फाइल नहीं करूंगा तो क्या है कि मेरा जो आइडिया है उस आइडिया पर किसी और ने अगर फाइल कर दिया देन ही विल गेट द पेटेंट। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही जो आपका आइडिया जिस पे आप वर्क कर रहे हो उस आइडिया को, उसका एक ब्रीफ फॉर्म में आप एक प्रोविजनल, आप फॉर्म 1 के साथ में फॉर्म 2 में प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दो। ये ऐसा वर्क है जिसपे कि मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा कंप्लीट होने वाला है, और इस पे क्या है कि मुझको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए और मेरा R&D इस पे चल रहा है। तो आपने जैसे प्रोविजनल फाइल कर दिया, नाउ यू विल गेट द प्रायोरिटी डेट। आपको जो अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट है वो आपको पहले मिल गया। नाउ विद इन 12 मंथ, जो आपने जो फाइल किया, आपका जो फाइलिंग डेट है, उस फाइलिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर यू कैन गो फॉर द फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपका जो बाकी का जो वर्क है जो कंप्लीट नहीं हुआ था उसको आप 12 महीने के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर उसको आप कंप्लीट कर लो। और जो आपका रिजल्ट आया है, आपका क्या कंप्लीट वर्क है, क्या आपका क्लेम्स है, जो भी आपका जो वर्क है, बट आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो स्टार्टिंग का जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है, आप उसमें जो भी आपका आइडिया था उससे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी और पे काम स्टार्ट किया था और बट आपने जो एंड कर रहे हो किसी और काम पे कर रहे हो, तो आपका जो बेसिकली जो आइडिया था वो आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए, आइडिया आपका सेम है, ठीक है। बट क्या है कि आपका जो रिजल्ट है अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो विद इन 12 मंथ आप उस रिजल्ट को कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट वो आप फाइल कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है कि आपको जो प्रायोरिटी डेट मिल रहा है वो एक साल पहले का मिल रहा है। आपने जब प्रोविजनल स्पेसिफिक जो फाइल किया था उस डेट का ही यू विल गेट द प्रायोरिटी डेट। तो आपको जो अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट मिला था वो पहले का मिल जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? आपके फाइल करने के बाद में अगर कोई सेकंड पर्सन भी उस एप्लीकेशन को फाइल करता है, उस आइडिया को फाइल करता है, देन ही विल नॉट गेट द पेटेंट बिकॉज द अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट दैट इज विद यू। आपने पहले फाइल किया था उसमें, तो आपको ही इसमें मिलेगा। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज ओनली विद द ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। नाउ फर्दर क्या होता है? आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ, 18 महीने के बाद में क्या होता है कि वो जो एप्लीकेशन है वो पब्लिश होता है, वो गवर्नमेंट का जो गजट होता है उसमें पब्लिश होता है। और उसमें क्या होता है कि कोई थर्ड पर्सन अगर उसको ये लगता है कि जो है कि जो आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपने कहीं ना कहीं से कॉपी किया था, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ही कैन गो फॉर द फाइलिंग ऑफ द प्री ग्रांट अपोजिशन फाइलिंग। तो दैट्स वाई जो एप्लीकेशन होता है उसको गवर्नमेंट गजट में ओपन करना होता है, पब्लिश करना होता है, कि कोई सेकंड पर्सन अगर उसको लगता है कि आपने कॉपी किया हुआ है, then he can go for the filing of the pre-grant opposition against your application. Okay, तो इसके बाद में क्या होता है? आफ्टर द पब्लिकेशन पार्ट, नाउ द एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म 18। फॉर्म 18 आप स्टार्टिंग में फाइल कर सकते हैं, और पब्लिकेशन के बाद में एग्जामिनेशन विल स्टार्ट बाय द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। नाउ जो एग्जामिनर ने जो अपना रिपोर्ट है, दैट रिपोर्ट विल बी पुट अप टू द कंट्रोलर, वो हमारे पास में आएगा। और फर्दर क्या है कि उसको हम देख करके कि क्या रिपोर्ट आया है फ्रॉम द एग्जामिनर जो उसने एग्जामिन किया हुआ है, देन फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जैसे आपने सुना होगा कि हम जो है कि पुलिस स्टेशन लोग जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR वहां पे जनरेट होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, दैट इज नोन एज द FER जनरेट होता है। और FER में क्या रहेगा कि आपका क्या आपके एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं, क्या हमको ऐसा लग रहा है कि उसमें पेटेंट नहीं मिलना चाहिए, या फिर कुछ इसमें अगर कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है विच आर नॉट अवेलेबल और विच आर इनकरेक्ट, देन जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट है दैट विल बी जनरेटेड एंड दैट विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट। वो एप्लीकेंट को बाय मेल, जो ईमेल आईडी है जो आपने जो स्टार्टिंग में दिया है वहां पे आपको ईमेल कर दिया जाएगा। देन विद इन जो 6 मंथ, आपको 6 मंथ टाइम मिलेगा
एंड दैट मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 3 months अप टू 9 months। अगर आपको लगता है कि 6 महीने में आप नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो, देन आपको रिप्लाई करना है विदिन 6 months, और रिप्लाई करके जो भी ऑब्जेक्शंस आए हैं उसका आपको रिप्लाई आपको फाइल करना है। आफ्टर दैट द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो रिप्लाई आएगा, देन फर्दर अगर जो कंट्रोलर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं कुछ और भी ऑब्जेक्शंस अभी हैं जो कि आपके साइड से सॉल्व नहीं हुए हैं, देन द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट विल बी जनरेटेड एंड दैट विल बी सेंट टू द एप्लीकेंट, और फर्दर उससे जो पूछा जाएगा कि आपका इस पे क्या रिप्लाई है, एंड फर्दर आफ्टर द रिप्लाई अगर आता है, देन फर्दर द हियरिंग विल बी डन। अगर रिक्वायर्ड है, अगर हमको लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कंप्लीटली फाइन, देन वी विल गो फॉर द ग्रांट। ग्रांट मींस रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर हमको लगता है कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, देन वी विल कॉल फॉर द हियरिंग। हियरिंग मींस जैसे कोर्ट में हियरिंग होता है वैसे ही आपको कॉल करेंगे फॉर द हियरिंग, एंड हियरिंग विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन। राइट नाउ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन। तो हियरिंग में क्या है कि आपसे जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, आपका रिप्लाई उस पर क्या है, कि आपका सबमिशन है, वो आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये आपका सोल्यूशन इस पे क्या है। तो आफ्टर दैट यू विल फाइल द हियरिंग सबमिशन विद इन नेक्स्ट 15 डेज। आफ्टर जो हियरिंग होने के बाद में आपको अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिशन देना है, उसके ऊपर लिख करके रिटर्न में देना है कि हियरिंग का ये जो क्वेश्चन था, जो हमने आपको जो बताया है कि क्या क्या हियरिंग में ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें हमारा क्या रिप्लाई है। तो आपके साइड से जो हियरिंग का सबमिशन आएगा, देन फर्दर वी विल एनालाइज, on that basis we will go for the grant or refusal of your patent application. That is the whole process. Now एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में दो टाइप से एग्जामिनेशन होता है। वन इज द फॉर्मल एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर्स करते हैं, वन इज द फॉर्मल एग्जामिनेशन जिसमें कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई क्लरिकल एरर है या फिर कोई ऐसा टेक्निकल जो भी आपका जो मिसिंग है, तो दीज आर द फॉर्मल एग्जामिनेशन। सेकंड इज द टेक्निकल एग्जामिनेशन। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें जो आपका वर्क है वो बेसिकली कहीं से कॉपीड तो नहीं है। कौन से ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम बोलते हैं प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पहले से आपके फील्ड का अवेलेबल है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड डेटाबेस में उसको सर्च करेंगे, सर्च करके देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपके डॉक्यूमेंट मैच करता है या फिर सिमिलर है या फिर कुछ लेवल तक मैच कर रहा है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एग्जामिनेशन। नाउ द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जो रिपोर्ट आएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन बाय द एग्जामिनर ऑफ द पेटेंट एंड डिजाइन, द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट दैट विल बी जनरेटेड बाय द कंट्रोलर। और वो जो इसमें क्या रहेगा कि जो व्हाट इज द जिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट को भेजा जाएगा, दैट इज द एफईआर। देन एग्जामिनेशन ऑन द रिप्लाई ऑफ द एप्लीकेंट, तो रिप्लाई जो एप्लीकेंट का आएगा ऑन दैट बेसिस फिर फर्दर एग्जामिनेशन होगा। देन हियरिंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि विच आर द टेक्निकल डिस्कशन ऑन पेंडिंग ऑब्जेक्शंस बिटवीन द एप्लीकेंट एंड हियरिंग ऑफिसर। जो हियरिंग ऑफिसर जो कंट्रोलर रहेगा और जो एप्लीकेंट रहेगा उसके बीच में हियरिंग होगा। मींस क्या है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है। देन द ग्रांट एंड रिफ्यूजल ऑफ द एप्लीकेशन विल बी डन। नाउ इन द केस ऑफ द टेक्निकल एग्जामिनेशन क्या क्या वर्क होता है कि वी विल रेट द एंड अंडरस्टैंड द इनोवेशन, कि आपका क्या फील्ड का इनोवेशन है, क्या आपने क्या ड्राइंग है, क्या फील्ड है, क्या इसमें टेक्निकल थिंग्स आपने जो किया हुआ है, which are the technical advancement आपने जो किया है, what are the inventive steps which are involved in this application, in this invention. Then further the search for the related, that is known as the citations, means the prior art document which are already available in the worldwide database, that will be searched. Then the check for the novelty and inventive steps that will be done as per the respective the citations. जो citations जो आए हुए हमारे पास में, हमने जो सर्च किया उसे हम चेक करेंगे कि क्या नोवेल्टी में आ रहा है, क्या इन्वेंटिव स्टेप आ रहा है। Then we will prepare the detailed examination report. Now we have some basic timeline in the case of the patent application. So जैसे मैंने आपको earlier बताया कि the earlier that was told that the provisional to complete specification you have the time limit of the 12 months. आप 12 महीने के अंदर अंदर आपका जो वर्क है कंप्लीट करके जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसको फाइल कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द priority date of 1 year back, 12 months back. That is the benefits of the ordinary application. Second is the request for examination, that is 31 month. The maximum time period in which you can go for the filing of the form 18, that is 31 month. Earlier that was 48 month, right now that is reduced to the 31 month. Third is the reply to the FER. जो FER जो generate होगा, that will be sent to the applicant. That will be the जो reply आएगा from the applicant, that is वैलिड अप टू द 6 मंथ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना ही करना है। फॉर्म 3 मंथ जो आपको करना है फ्रॉम द जो आपने जो भी फाइलिंग किया हुआ है फॉरेन कंट्री में। फॉर्म 5 1 मंथ और फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको करना है, फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, देन विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। हियरिंग सबमिशन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द हियरिंग। प्री ग्रांट अपोजिशन बिफोर ग्रांट, एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन
within 1 year. तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने किसी सेकंड पर्सन का आपने कॉपी किया हुआ है, एंड बाय लक इफ यू आर गेटिंग द पेटेंट डन ऑन योर नेम, देन इफ सेकंड पर्सन जिसका आपने कॉपी किया उसको लगता है कि नहीं ये जो एप्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं से ये मेरे एप्लीकेशन का कॉपी किया हुआ है, देन विदिन वन ईयर from the date of the grant of the patent application, he can go for the filing of the post grant opposition against your application. वो क्या है कि वो ऑफिस में फाइल कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट में, और फर्दर इस पे हियरिंग फिर से होगा, फिर से आपको बुलाएंगे, और उसमें क्या है कि दोनों पार्टीज उनको आप बात को सुन करके क्या इसका रिजल्ट है, एनालिसिस है, देन आपका जो एप्लीकेशन है दैट कैन आल्सो बी रिफ्यूज्ड इफ दैट इज नॉट नॉवेल और इन्वेंटिव नहीं है. ओके, नाउ सेकंड इज द डिजाइन. डिजाइन बेसिकली क्या है? डिजाइन बेसिकली दैट इज एनी काइंड ऑफ द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल. उसका जो बाहर का जो ऑर्नामेंटल है या एस्थेटिक एस्पेक्ट है, आउटर, और लाइक द फीचर ऑफ द शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ornament or composition of lines, colors applied on any article that may be in two-dimensional form or in three-dimensional form or in both forms by any industrial process or means. Okay, so if that is increasing its appeal to the customer or judged by the solely by the eye. So here these are the various examples. And what are the time period? जैसे पेटेंट के केस में आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है that is 20 years. Now in the case of the design that is only 10 years, but that can be extended to next 5 years. पेटेंट के केस में एक्सटेंड नहीं होता है, बट डिजाइन के केस में एक्सटेंड होता है by next 5 years. So the total lifetime of the design application that is 15 years. Okay, so you can see here various examples like the साड़ी, like the fashion में जो फैशन डिजाइनिंग में आता है जो बहुत से फैब्रिक्स हैं. सेकंड इज द फैन, इसका जो आउटर शेप है, पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, लाइक अ बैग. और नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजाइन. डिजाइन का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है? जो कंज्यूमर्स हैं उनके व्यू में जाएगा कि वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट का कैसा है. उनको दिखने से कुछ अलग डिफरेंट डिजाइन है तो आपका एक वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और जो कस्टमर है उनके दिमाग में वो बैठेगा कि मीन्स ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसको मुझे परचेस करना चाहिए. मेक्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स माइंड. ओके, एंड एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट. अगर वो कुछ डिफरेंट डिजाइन है, कुछ अच्छा डिजाइन है, देन साथ में क्या होता है कि दैट विल आल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट विल हेल्प इन gaining the fair and return of the investment. Okay, and that will be the part of the Design Act 2000. Okay, now what are the criteria for obtaining the design registration. यहाँ भी वैसे ही criteria है जैसे पेटेंट में था, like the novelty and originality. जो डिजाइन एप्लीकेशन है वो नॉवेल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए. मीन्स क्या है कि न्यू होना चाहिए और आपका अपना एप्लीकेशन होना चाहिए ओरिजिनल. वो कहीं भी किसी भी वो कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होना चाहिए. The design can be considered for registration only if they are unique. A combination of previously registered design can also be considered only if the combination produce new visuals. ठीक है, कुछ नया आपने क्रिएट किया हुआ है, then only you will get the design registration. Second is the prior publication is not acceptable. जो पहले उसमें था पेटेंट में, सेम वैसे ही जो भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर आइडिया. मीन्स क्या है कि आपको पहले पब्लिश नहीं करना है किसी भी लेवल पे, ऑनलाइन फॉर्म में या ऑफलाइन फॉर्म में आपको पब्लिश नहीं करना है, बट यू विल गो फॉर द बेसिकली पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. Design should have not be disclosed to the public anywhere by publication in tangible form or by use or in any other way prior to the filing date. That is very important. Now third is the significantly distinguishable. अगर कोई भी और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वैसा डिजाइन का है बट आपका भी सिमिलर है, तो अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है then you will not get the design registration. तो वो एक सेम वैसे प्रोडक्ट में भी एक सिग्निफिकेंटली वो डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि आपको कुछ डिफरेंट डिजाइन है. Apart from that, we have other criteria like the must not comprise or contain scandalous or obscene matter, must not be against the order and morality of the public, must not be prejudicial to the security of India, and if, these applications should not be the part of anything which are the part of trademark or copyright. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ट्रेडमार्क में भी आ रहा है, कॉपीराइट में भी आ रहा है और डिजाइन में भी आ रहा है. सो जो भी वो जो आपको यहाँ फाइल करना है that should not be the part of trademark or copyright. Okay. Now we have several examples of the design like the different shapes, configurations, surface pattern of bottles. Various bottles you can see here. Now various designs of different articles like the toys, inhalers, table lamp, clock, okay, watches, cards,
design of the different set of articles. These are also part of the design of kind of the intellectual property, like the jewelry sets, like the sofa sets, cup sets, okay, shoes, okay, pair of shoes. So set means a number of articles which have the similar means क्या है कि एक similar उसका same design होता है. So these are basically the set. Okay, now which are the requirement of to file an ordinary application? So for the ordinary application, the fee है that is 1,000 rupees, and for that is for the individual person, for the small entity, for the startups, okay, and for the bigger company that is 4,000 rupees. That is very important. तो जो common person है, for individual person, for small entity, MSMEs, for startups, for colleges, that is 1,000 rupees only. एप्लीकेशन फॉर्म 1 जैसे वहां पे था पेटेंट में सेम वैसे यहाँ पे फॉर्म 1 में भी क्या है कंप्लीट जो डिटेल्स रहेगा अबाउट द एप्लीकेंट, अबाउट द एप्लीकेशन, लाइक द फुल नेम, नेशनैलिटी, लीगल स्टेटस, एड्रेस, क्लास ऑफ द आर्टिकल, प्योरिटी डेटा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपको साथ में क्या 2 सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलस्ट्रेटिंग वेरियस व्यूज ऑफ आर्टिकल, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, और बॉटम व्यू, जिसमें भी आपने कुछ चेंजेस किया हुआ है वो आपको फाइल करना होगा. पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड, कहीं के पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड होता है अगर जो भी आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है वो खुद से फाइल ना करके वो फाइल के हेल्प के लिए किसी न किसी पेटेंट एजेंट को, ट्रेडमार्क एजेंट को हायर करता है. इफ ही इज फाइलिंग योर एप्लीकेशन, इन दैट केस पावर ऑफ अटॉर्नी दैट शुड बी साइंड बिटवीन यू एंड the advocate, patent agent or trademark agent, and that will be done in form 21. In case of the patent, that is under the form 26. Assignment that can also be filed if applicant is different and inventor is different. Then applicant and inventor will sign. बेसिकली जो इन्वेंटर है वो अथॉरिटी देगा किसको, एप्लीकेंट को, कि ये वर्क मैंने किया हुआ है बट मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ जो एप्लीकेंट को कि ही कैन गो फॉर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑन देयर नेम. तो बिटवीन देम दे विल फाइल द असाइनमेंट डॉक्यूमेंट. आपस में एक असाइनमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम स्टाम्प पेपर पे साइन होता है. फॉर्म 24 दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल एंटिटी और स्टार्टअप. Filing of design application. So design head office that is in Kolkata, IPO Kolkata, but each and everything that is completely online. तो आप ऑनलाइन जाकर जैसे पेटेंट फाइल करते हैं वैसे कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन गो फॉर द फिजिकल फाइलिंग इन एनी 4 ऑफिस इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता. दीज आर द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो आपको लास्ट में मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. नाउ थर्ड इज द ट्रेडमार्क. द ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है कि ट्रेडमार्क दैट इज एनी वर्ड, एनी नेम, any symbol or device or any combination thereof of any company. Basically जो कंपनी का नेम है उसका वर्ड भी सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स और नेम और सिंबल और डिवाइस, लोगो काइंड ऑफ. सो दीज आर द ट्रेडमार्क. बेसिकली आइडेंटिफाइज, इसका हेल्प, इसका बेनिफिट क्या है कि इट आइडेंटिफाइज एंड डिस्टिंग्विशेस द सोर्स ऑफ गुड. किस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है उसको किस कंपनी ने बनाया हुआ है, what is the source of product, कौन सी कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है, that can be identified from the trademark. What are the functions and importances? It provides the exclusive monopoly. जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रेमंड है, वो अपने जो फैब्रिक बना रहा है तो उसको एक मोनोपोली मिल रहा है रेमंड से कि कुछ लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या मीन्स क्या कहते हैं कि ये जो फैब्रिक है रेमंड का है या फिर मानेवर का है, मीन्स ये इसकी क्वालिटी ऐसा होगा. तो दैट विल गिव द मोनोपोली टू द जो भी उसका जो मैन्युफैक्चरर है ऑन देयर कॉम्पिटिटर्स. अलाउ बिजनेस एंटिटी टू बिल्ड पब्लिक गुडविल, ब्रांड का रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए, पब्लिक गुडविल के लिए, दैट विल बी बेनिफिशियल. आइडेंटिफाई द सोर्स ओरिजिन ऑफ गुड, अश्योर्स कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी. जो मैंने आपको बताया कि क्वालिटी के लिए मीन्स क्या है, कस्टमर को पता होता है कि यार ये लोगो है मीन्स ये इस कंपनी का है, मीन्स अच्छा होगा या खराब होगा वो आपको आइडिया लगता है. देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ द ट्रेडमार्क. So trademarks including service marks. So you can see here like the McD, McDonald's का ऐसा ट्रेडमार्क होता है. जो कोका कोला का पता है, जो कोक होता है उसका ऐसा है, जो वर्ड उसका फुल नेम लिखा होता है, that is the brand name along with the logo. This is the logo of the McDonald's. Google उसका brand name, ठीक है, ट्रेड नेम आप बोल सकते हैं इसको. This one is the trademark of the Nike. इसमें देखिए कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं कि ये Nike का है, but that is the trademark of the Nike. Adidas, that is the collective mark of the name as well as the trademark. साथ में that is the combined marks, collective marks. This one is the Columbia of the production company in the Hollywood, the production company of the movies. Naukri.com, ये उसका
एक कलेक्टिव मार्क्स भी आप बोल सकते हैं या ट्रेड नेम बोल सकते हैं, naukri.com. ये दिल मांगे मोर, दैट इज द टैगलाइन और स्लोगन ऑफ द पेप्सी, दैट इज आल्सो द ट्रेडमार्क. दैट इज द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक ये है सर्टिफिकेशन मार्क. दिस इज आल्सो काइंड ऑफ द ट्रेडमार्क. ओके, नाउ अ गुड ट्रेडमार्क शुड बी, कैसा होना चाहिए? तो जो ट्रेडमार्क जो अच्छा होना चाहिए वो कैसा होगा कि नॉट डिसेप्टिवली सिमिलर, वो ऑलरेडी जो मार्केट में जो प्रेजेंट जो ट्रेडमार्क है उससे मैच नहीं करना चाहिए. तो आपको जब भी उसको कोई ऐसा ट्रेडमार्क रखना है तो आपको ऑनेस्टली अडॉप्ट करना चाहिए, क्वाइन करना चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर सर्चिंग करना चाहिए, नॉट सिमिलर होना चाहिए. बिफोर अडॉप्टिंग अ न्यू मार्क प्रॉपर आप सर्च करिए, इवेल्युएट करिए कि कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है. इट ऑल्सो अवॉइड द अननेसेसरी लिटिगेशन. अगर आपने कोई मिसयूज किया हुआ है देन फर्दर कोई कंपनी को अगर लगता है कि आपने उसका कॉपी किया हुआ है देन दे कैन गो फॉर द सूट ऑफ एनी लॉ सूट इन हाई कोर्ट. वो आपको वहां फाइल भी कर सकते हैं अगेंस्ट योर कंपनी और अगेंस्ट योर ट्रेडमार्क. नाउ हाउ टू इंडिकेट योर ट्रेडमार्क. तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें TM मेंशन होता है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे R इन सर्कल मेंशन, कैपिटल R इन सर्कल मेंशन होता है. So if there is any representation of the capital R in circle, it means that is a registered trademark. And if there is a mention of the TM, then generally that is unregistered or application pending. Right now that is not registered. After the registration process, they will mention the R in circle. That is the registered. That is the indication of your trademark. Now, how to protect your trademark? कैसे करना है? So basically, जो trademark का जो protection है, that is the registration that is completely optional, that is not mandatory, but that is having the certain advantage, which has certain advantages. That's why you should go for the registration of the trademark. Registration that is available at the national level, so similar to the patent, जो जितने भी IPs हैं, their registration that is done only at the national level by the central government, not by the state government. Okay. इनिशियली रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फॉर 10 ईयर. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ट्रेडमार्क है इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है इसका जो लाइफ टाइम है दैट इज ओनली 10 years, but that can be extended indefinitely. Every 10 years you can go for the renewal of your trademark, so that can be extended indefinitely. So that is no any lifetime basically, but आपको एक बार में जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो आपको 10 years के लिए लेना है. In case of non use, नॉन रिन्यूअल और नो पॉलिसी, अगर आप इसका जो ट्रेडमार्क है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक कंपनी फर्दर जो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, यूज नहीं हो रहा है, रिन्यूअल आप नहीं करा रहे हो, प्रॉपर पॉलिसिंग नहीं हो रहा है कि इफ एनी अदर कंपनी इज आल्सो यूजिंग योर ट्रेडमार्क, प्रॉपर आप चेक नहीं कर रहे हो, देन ट्रेडमार्क राइट्स कैन आल्सो लॉस्ट. एनीथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडमार्क्स, बेसिकली जो एक्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द 1999 एंड ट्रेडमार्क रूल ऑफ 2017. जो रूल्स हैं, जो एक्ट है वो 1999 और 2017 में फॉर्म हुए फ्रॉम द पार्लियामेंट. नाउ फोर्थ वन इज द कॉपीराइट. तो कॉपीराइट इज बेसिकली द ऑटोमेटिक राइट एंड दैट इज द बंडल ऑफ राइट. यहाँ पे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो ये है कि इन केस ऑफ द कॉपीराइट देयर इज नो एनी यूज ऑफ द रजिस्ट्रेशन. इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर जो भी आपका आर्टिस्टिक वर्क है या फिर आपका जो लिटरेरी वर्क है, इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन then only you can go for the claiming of copyright. So that is the automatic right. जैसे ही आपने जो आपका लिटरेरी वर्क है या आर्टिस्टिक वर्क है जैसे ही आपने क्रिएट किया, फ्रॉम दैट डे यू कैन गो फॉर द, मीन्स कहते हैं कि आप क्लेम कर सकते हो कि दैट इज द कॉपीराइट फ्रॉम द या फिर बाय द जो भी उसका ऑथर है, दे कैन गो फॉर द क्लेमिंग. बट अगर आपके पास में क्लेम करने के लिए कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द फाइलिंग ऑफ द कॉपीराइट. आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं फॉर द क्लेमिंग पर्पस कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया था, कि ये मेरा ही ऑथरशिप है, मेरे ऑथरशिप में ये फर्स्ट मैंने ही क्रिएट किया था. फॉर दैट पर्पस यू कैन गो फॉर द क्लेमिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट. सो एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द क्रिएटर्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप. जिसने ओरिजिनल उसको क्रिएट किया था, ऑथर जो ऑथर किया था, ऑथरशिप किया था, उसको मिलता है. दैट इज विशेषाधिकार या एक्सक्लूसिव राइट है. अब ये क्या, इसका बेनिफिट क्या है? इट अलाउज द ओनर टू चूज द वेज हिज कॉपीराइट जो वर्क है दैट विल बी मेड टू द मेड अवेलेबल टू द पब्लिक. पब्लिक में आपको कैसे उसको सेल करना है, कैसे उसको पब्लिक में लाना है आपको. दैट इज द बेनिफिट दैट विल बी गिवन टू द ओनर ऑफ द और ऑथर ऑफ द, जो भी उस प्रोडक्ट का ऑथर है, दैट इज द बेनिफिट गिवन टू द ओनर ऑफ द इन्वेंशन, ओनर ऑफ द कॉपीराइट वर्क. नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉपिंग और रिप्रोडक्शन. तो कोई सेकंड पर्सन अगर आपका जो बुक है या आपका जो आर्टिस्टिक वर्क है उसको अगर कॉपी करता है तो उसको प्रिवेंट करता है कि अगर आपने कॉपीराइट आपने क्लेम किया हुआ है. So next one is the section 2y defines the works as well as section 13.
that have the works in which copyright subsists. That is the part of the Copyright Act of 1957. इसमें सारा मेंशन किया हुआ है अंडर सेक्शन 2Y what are the works डिफाइन करते हैं, एंड अंडर सेक्शन 13 which are the fields or works in which copyright subsists. Now the important thing that is the copyright cannot protect an idea. ये आपको ध्यान देना है. It means if you are just thinking about any idea, अगर आप कहते हो कि जो ये बुक है अगर किसी सेकंड पर्सन ने कोई ऐसा स्टोरी का बुक लिखा, बट क्या है कि वो आइडिया जो उस बुक का जो स्टोरी है वो फर्स्ट आपने सोचा था, बट आपने कहीं पे उसको किसी फॉर्म में आपने क्रिएट नहीं किया, आपने कोई बुक नहीं लिखा, तो जस्ट कॉपीराइट कैन नॉट प्रोटेक्ट एन आइडिया जस्ट आफ्टर थिंकिंग कि ये जो आइडिया था फर्स्ट मेरे दिमाग में आया था, आई कैन गो फॉर द क्लेमिंग ऑफ दैट आर्टिस्टिक वर्क. ऐसा पॉसिबल नहीं है. मीन्स क्या है कि जो आइडिया है वो आपके दिमाग में अगर है तो उसको कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता है. बट फॉर दैट the criteria for the work to be copyrighted, there are 3 criteria, which are first one is the fixation. It means if you are going for the, अगर आपने दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है, if you have any kind of the different idea for the artistic work, then first of all you should go for the fixation of that idea. Fixation का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है then you have to write the book. आपको बुक के फॉर्म में उसको कहीं पे आपको फिक्स करना पड़ेगा, किसी उस पर आपको उतारना पड़ेगा कि ये आइडिया जो है मैंने क्रिएट किया है. अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा मूवी का आइडिया आता है तो मूवी को आपको रिकॉर्ड करना होगा. कोई म्यूजिक है तो म्यूजिक को आपको रिकॉर्ड करना होगा. कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई पेंटिंग है तो पेंटिंग को आपको ड्रॉ करना होगा. ठीक है. कोई ऐसा स्क्रिप्चर है तो स्क्रिप्चर को आपको फॉर्म करना होगा मीन्स that idea should be fixed, then only you can go for the claiming of that idea, that artistic work कि ये वर्क मेरा है. ओके. सेकंड इज द ओरिजिनलिटी. जो आइडिया है, जो वर्क है, दैट शुड बी ओरिजिनल, दैट शुड बी नॉवेल, दैट शुड बी न्यू. वो आपका नया होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं का कॉपीड नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड इज द क्रिएटिविटी. दैट जो भी वर्क है वो क्रिएटिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया है. दैट शुड हैव मिनिमम मॉडिकम लेवल ऑफ द क्रिएटिविटी. मीन्स ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है कि क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है, बट एक मिनिमम मॉडिकम लेवल का कुछ क्रिएटिविटी होगी, कुछ ऐसा लगे हाँ ये रिलेवेंट वर्क है. That is, so these are the 3 criteria for the work to be copyrighted. So now we have these different fields of subject matter for the copyright work. First one is the literary work, that is the under section 2O. So any kind of the literary work like the book for story or novel or any kind of the poem. So these are the literary works under the copyright. Artistic work, any kind of painting. Okay, these are the part of copyright. Any kind of the dramatic works, any kind of dance, drama. दैट कैन बी, अगर कोई ऐसा परफॉर्म हुआ है स्टेज पे, कोई परफॉर्मेंस है जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है, अब तक नहीं हुआ, दैट कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट. एनी काइंड ऑफ द म्यूजिकल वर्क, कोई सॉन्ग है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई म्यूजिक है, दैट कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड. एनी काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट वर्क. कोई मूवी है, फिल्म है, जैसे आज के टाइम में बहुत से यूट्यूबर्स आ गए हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल्स पे अपने वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं. सो दैट विल बी प्रोटेक्टेड जस्ट आफ्टर द क्रिएशन. आपको लेना भी नहीं है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, बट आपके पास क्लेम के लिए होना चाहिए कि फर्स्ट आपने ही ये आइडिया, ये जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया था. सो दैट इज दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉपीराइट. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉपीराइट, that is the term of protection, that is the part of section 22, that is very important. So published, any kind of the published literary work, dramatic work, artistic work and musical work, इसमें आपको ध्यान देना है, इसका जो लाइफ टाइम होता है, जो आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी का जो राइट है, अधिकार जो आपको मिल रहा है, that is up to the life of the author. जो ऑथर है उसका जो लाइफ टाइम, up to the death of the author, and after his death the 60 years, next 60 years to their family. और जिसको भी उसको क्लेम करने को बोल सकता है, कोई एनजीओ या कोई सेकंड पर्सन, कोई फ्रेंड, आफ्टर हिज डेथ up to 60 years that right is available with that person जो ओनर है. Means for example, if Mahatma Gandhi had written any book or Pandit Jawaharlal Nehru had written any book, then जो रॉयल्टी आ रहा है from the selling of that book, that was given to the family और जो भी पर्सन उसके लिए इंटाइटल्ड था, up to the 60 years after the death of Mahatma Gandhi और पंडित जवाहरलाल नेहरू. So that is basically the big benefit of the copyright. अगर आपने कोई किताब लिख दिया तो किताब से जो आपको रेवेन्यू आने वाला है वो आपके लाइफ टाइम तो आएगा ही आएगा,
after your death up to the 60 years, your children, your next generation can also get the benefit after from that kind of the copyright artistic works. From the cinematography, film and sound recording, on 60 years from the date of publication. Broadcasting reproduction right, 25 years. Performance right, 50 years from the year of the performance made. Application procedure, form 14. That is the application. इसमें आपको form 14 फाइल करना होता है, and every such application can be filed in the copyright office by person or by post or by e-filing facility. तो in this case also each and everything that is completely online. आपको कहीं physically जाना नहीं है. अगर आप physical file करना है तो वो भी एक option है. Everything that is online. Payment is also online. Okay. Now there are fees. इसका fee क्या है? That is a part of schedule 2 for the literary work, dramatic work, artistic work, musical work, which are not the goods and service. जो कि goods and service का commercial part नहीं है, ऐसा आपका individual part है. Literary work, dramatic, artistic, musical, only 500 rupees. कोई ऐसा artistic work है जो कि to be used for the capable of being used in the goods and service, then 2000 rupees. For sound recording, 2000 rupees. For movies, films, 5000 rupees. Okay, that is these are the fees of the different kind of the applications. Now next one is the SICLT, which are the semiconductor integrated circuit layout design. Basically these are important for the bigger companies because these are changing very fast. So these are the semiconductor integrated circuits, which are means a product having transistors and other circuitry elements. तो बहुत से जो हम पता है कि डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनका यूज करके सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं और सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेट करके एक सर्किट फॉर्म होता है और सर्किट का जो एक लेआउट डिजाइन होता है, that is also the part of the intellectual property, and it has the registry office in Delhi. Okay, और इसका जो लाइफ टाइम है that is the 10 years. Okay, so basically that is not very much important for the individual person, that is important for the bigger companies. So because these are changing very fast and we have very less application in SICLD. Now last one is the geographical indication, which are the invaluable treasures of incredible India. So in our country we have more than 500 such products which are given the GI tag, means the geographical indication tag from the government of India for the recognition of these products which are developed in various parts of countries, and that is important for the basically the support of the local artisans for their employment as well as to boost the local economy of that area. और जो प्रोडक्ट है that will be basically उसका एक recognition create होगा at the global level, at the national level. Even you know that our prime minister or president when they went to any foreign country, or if any foreign जो dignitaries हैं, if they are coming to India like in G20, then our prime minister they are giving basically the जो गिफ्ट के फॉर्म में एनी काइंड ऑफ द जीआई प्रोडक्ट, जिससे कि जो जीआई प्रोडक्ट है वो एक वर्ल्ड वाइड उसका एक रिकॉग्निशन क्रिएट हो और जो लोकल आर्टिसंस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं, उनको सपोर्ट मिले और उसका फर्दर एक्सपोर्ट हो और उससे लोकल एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट्स मिले. तो विच हैव वेरियस एग्जांपल्स लाइक द दार्जिलिंग टी, ओके, मकराना मार्बल ऑफ राजस्थान, रतलामी सेव, कांचीपुरम सिल्क, कठपुतली ऑफ राजस्थान, आपको पता होगा, बाग प्रिंट्स ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, बंगाल पाटचित्रा, दीज आर द बेसिकली पेंटिंग्स, चेरियाल पेंटिंग्स, बिदरी वेयर, वारली पेंटिंग्स, मगही पान ऑफ बिहार, देवनहल्ली पमेलो, अपिमेदी मैंगो आंध्र प्रदेश, कश्मीरी सैफरन, शाही लीची ऑफ बिहार, कुर्ग ऑरेंज, अलीगढ़ का ताला ज्योग्राफिक इंडिकेशन का है, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, भदोही का कारपेट, कांगड़ा की चाय, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल. सो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे हैं जिनको जीआई टैग गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. सो बेसिकली वी हैव आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एवरीवेयर. तो अगर हम देखें तो हमारे मॉर्निंग में उठने से लेकर के रात में सोने तक हमको जितने प्रोडक्ट भी जो हमको दिख रहे हैं, सभी प्रोडक्ट में कोई ना कोई आईपी है, बट वी आर नॉट अवेयर. लाइक फॉर एग्जांपल, आपका जो ब्रश है, मॉर्निंग में अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश किसी कंपनी का होगा, उस कंपनी का में क्या है, उसमें लिखा होगा ना ट्रेडमार्क, कि वो कंपनी का लोगो क्या है, ब्रांड नेम क्या है.
कॉलगेट है, कॉलगेट का जो उसका जो एक पेस्ट है, पेस्ट एक मिक्सचर है, मिक्सचर में पेटेंट हो सकता है, ठीक है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है, या जो कंपनी ने पेस्ट को बनाया है उसका वो एक ट्रेडमार्क हो सकता है, या पेस्ट का, या फिर जो आपका जो टूथब्रश है उसका कुछ डिजाइन होगा, उसमें डिजाइन हो सकता है। जो आपके कपड़े हैं, जो आपके जो ड्रेस है, ड्रेस में अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो ड्रेस में लिखा होगा कि किस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है, उसमें आर इन सर्कल और टीएम लिखा होगा, मीन दैट इज द ट्रेडमार्क, उसने रजिस्टर्ड है कि नहीं, कंपनी का जो लोगो है, नेम है, वो उसका ट्रेडमार्क है। आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, लाइक योर फोन, योर लैपटॉप, योर कार, योर बाइक और योर फैन, एनी काइंड ऑफ द मशीन, एनी फ्रिज, एनी वॉशिंग मशीन, जो भी है मशीन है, सभी में कोई ना वो पेटेंट है, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, उसका डिजाइन है, वो डिजाइन है, कंपनी का नाम लिखा है, मीन्स क्या है कि उस पर ट्रेडमार्क है, ठीक है। कोई भी खाने के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने देखा ऐसे बहुत से हैं जो कि जीआई के हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बहुत से जलेबी है, कोई ऐसा मिठाई है, कोई ऐसा रसगुल्ला है, ये सब जीआई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा पेंटिंग है, कोई ऐसे क्लोथ्स हैं, फैब्रिक्स हैं, साड़ी है, वो सब क्या है कि जीआई के पार्ट है, ठीक है। आपके जितने भी आपके बुक्स हैं, जितने भी आपके आर्टिस्टिक वर्क्स हैं, जो भी आप मूवीज देख रहे हैं, जो आपकी म्यूजिक है, जो साउंड रिकॉर्डिंग है, जो भी सॉन्ग्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, और साथ में जो बुक्स हैं, सब कुछ में क्या है, कॉपीराइट है। So basically IP is everywhere from our morning to our night, okay, but we have to be aware of these things. Now what is the validity of these different IPs? So patent that is valid for 20 years. आपको ये ध्यान देना है कि any kind of the IP that is the global thing, ये global thing नहीं होता है या international नहीं होता है, वो क्या होता है, territorial right. So these rights are territorial right, means these are valid ओनली इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। टेरिटरी में उसका जो भी कंट्री का राइट है, उस कंट्री के जो बाउंड्री होगा, उसी बाउंड्री में ही वो वैलिड है। अगर आपको सेकंड कंट्री में उस राइट को चाहिए, तो आपको सेकंड कंट्री में भी आपको फाइल करना होगा, और वहां पे ग्रांट होगा, देन ओनली यू कैन गो फॉर द क्लेमिंग ऑफ योर राइट इन दैट कंट्री। सो पेटेंट का जो लाइफ टाइम है दैट इज 20 ईयर्स, डिजाइन का 15 ईयर्स मैक्सिमम, 5 ईयर एक्सटेंडेबल है, जो कि ट्रेडमार्क्स इंडेफिनेटली आफ्टर द रिन्यूअल एवरी 10 ईयर्स, copyright lifetime of the author plus 60 years, GI indefinitely subject to the renewal, ठीक है। who can apply, any person. in the case of the GI के केस में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन फाइल नहीं करता है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फाइल करता है उस एरिया का, बट जो क्या नाम है कि पर्सन नहीं फाइल करेगा। पर्सन का मीनिंग बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो फाइल करता है, कोई फर्म फाइल कर सकती है, कोई कंपनी फाइल कर सकता है, कोई पार्टनरशिप में, कोई स्मॉल एंटिटी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई सिंगल पर्सन, कोई ज्वाइंट एप्लीकेंट, कोई भी फाइल कर सकता है। कोई कॉलेज में, कोई कॉलेज है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई भी फाइल कर सकता है एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। ऑल आईपी राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। वंस टू रिमेंबर, आपको जो ध्यान देना है, फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन लेना है जस्ट आफ्टर द फाइलिंग, आपको फाइल करना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर दिया, आपको प्रोटेक्शन मिल गया, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता रहेगा, बट आपको जस्ट पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। देन ओनली यू हैव टू गो फॉर द पब्लिकेशन। सेकंड इज द राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज डन बाय द सॉवरेन अथॉरिटी, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सबका अपना अपना एक कुछ टाइम पीरियड है जो भी आईपी राइट्स है, कोई ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं मिलता है। कोई अगर सेकंड पर्सन कॉपी करता है, देन यू हैव टू गो फॉर द फाइल इन्फ्रिंजमेंट सूट इन एनी कोर्ट। रिन्यूअल फीस टू बी पेड फॉर द सम आईपीआर, कुछ आईपीआर में रिन्यूअल फीस भी आपको पे करना पड़ते हैं। और इफ यू वांट टू गो फॉर द फाइलिंग ऑफ दीज आईपीआरस, आईपी एप्लीकेशन, देन यू कैन गो फॉर द फाइलिंग, आप खुद से फाइल कर सकते हैं, फाइल हिमसेल्फ। देयर इज नो एनी यूज ऑफ एनी patent agent or trademark agent, but if you want the help, then you can go for the taking the help from the appointed patent agent. तो जो पेटेंट एजेंट और ट्रेडमार्क एजेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्जाम दे करके यहाँ पे हमारे ऑफिस में वो अपॉइंट होते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनका हेल्प लेके आप फाइल कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको फाइल कर सकते हैं। For further contact details, you can go for the training in the Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, that is in Nagpur, for any help, for any training. Okay, so we have also various career opportunities also in this field. So in private field or in government field, in government job, examiner of patent and design, then controller of patent and design, same in trademark and GI copyright. Okay. In other field, like in private sectors, patent agent, trademark agent, GRF, SRF,
at patent facilitation centers. Along with that, in patent litigation, other opportunities in private sectors, in R&D companies, there are lots of options right now. Now we have a small quiz, and I'm requesting all person, everyone, to just take in this quiz, take the part in this quiz. Now, first one is the find the famous trademark. So we have some name of the companies which are very famous trademarks. So please tell me. So Amul, I can read at once. Right. It's Bata and Babool. Tata. Right. Bata. Babool. Bata is there. Babool is also here. The Cadbury. Cadbury, right? Cadbury. Cadbury is there. The Dabur. Dabur. Okay. Now we can. Pepsi is also here. Pepsi, Link, Cadbury, Tata, Dettol, Babool, Bata, Horlicks, Amul. Okay. Now find the IP in these products. So first one is the patenting. Which IP? Patent, design, trademark, copyright. GI. Copyright. Copyright, right. Copyright, sir. That is the Mona artistic Lisa work, is that is the artist. painting. Yes, sir. Second is The second is also artistic work. copyright. That is artistic work, copyright. Third is patent. Patent. No, third is you can also go for patent, but here we are saying Design. Trademark also. logo. Trademark. Logo, yes. Apple. Logo is Okay. trademark. 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 Okay. Distillery, Again, trademark, sir. trademark. That is the trade name. Company Name, name or logo, that is the name. part of trademark. Okay, Coca-Cola is a trademark. this is also a trademark. The trade name of the company, brand name, that is a trademark. Now this question is the which type of the IP protects the patenting? अभी हमने पहले ही देखा था first Copyright, question. painting, artistic work. First question यही था ना यहाँ पे? First question, Ji, sir. painting, Painting. same like the copyright. Copyright. Okay. Next one is what protects the intellectual property created by the fashion designers? Copyright. The designs, I think. Design. Design, Hmm. correct, design. Designs. What protects the advanced disc brake for bike developed by the inventors? Patent, I think. Patent. Right, because that is the machine, that is the technology. Yes, So sir. in case of any machine or any technology, you will go for the patent. Okay. Which of these is the GI? Nagpur Orange. Nagpur Orange. Okay, Nagpur Orange. What does a trademark protect? Logos, names, and brands. Right, logo. Logos, name and brands. How long can a patent last? 20 years. 20 years. Correct. If you write an original story, okay, what type of intellectual property gives you the right? In case of any story, means any book, Copyrights. Copyright. 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 In case of any literary work, you will go for the copyright. Correct. Copyright. Imagine Virat Kohli sets up his own company to sell his own range of clothes. Okay, so for his company, the brand, which kind of intellectual property he will go for? For the brand. Designs. For the brand, he will go for trademark. Trademark. Trademarks. So that the clothes are made by his company. Hmm. कंपनी का नाम होना चाहिए ना, Hmm. Trademarks. कुछ लोगो होगा, कंपनी का कुछ ब्रांड Trademarks. ट्रेडमार्क. Okay. If a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property? Patent. Technology. Patent. Technology means patent. Patent. Technology आएगा, machine Patent. आएगा. Okay. Now we have a few very motivating example of means ऐसे IP holders का. So basically he is the youngest design holder.
यहाँ पेटेंट लिखा हुआ but design, that is the design basically. So and he was from your state, Jaipur, and 2-3 years back he died basically. He died, and only at the age of 8 years 10 months 23 days he invented a 6-pair circular chessboard only at the age of 8 years 10 months 23 days. Oh. Okay, so he So, was one of the youngest design holder of India, Hideshwar Singh Bhati from your state. Vishalini NC, she is among the youngest patent holder of India, and this was also tweeted by our Prime Minister. And only at the age of 6 years, she invented an automatic multifunctional life rescue flood house. So I want to say that basically there is no any kind of the age bar or any kind of the educational bar for the creation of any kind of the intellectual property. Means आपको कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको ऐसा एज का बार है कि आपको इतने साल के हो जाओगे, इतना एज होगा तभी आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है. जस्ट दैट इज द क्रिएशन ऑफ योर ब्रेन, योर आइडियाज, योर इनोवेशन. आपका क्रिएटिविटी क्या है, आपको लाइफ में आपको जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास में कि ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में है कि मैं इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए कि ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उनको चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन यू वाना क्रिएट, यू वाना मींस क्या मैन्युफैक्चर, और आपके दिमाग में आता है कि मैं कुछ ऐसा स्टिक बना दूं कि वो हाइट एडजस्ट कर पाए, कभी नीचे से ऊपर से कुछ भी ऐसा, जस्ट बाय यूजिंग सर्टेन स्प्रिंग्स और एनीथिंग और एनी मशीन. मींस आपको लाइफ में जहाँ पे भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो भी बना दिया, दैट इज इनोवेशन, दैट इज इनोवेशन. और वो जो प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत इजी प्रॉब्लम है और उसका जो सॉल्यूशन जितना इजी है और जितना ज्यादा वो मीन्स क्या कॉमर्शियली वो यूज होगा मार्केट में, उतना ही आपको बेनिफिट है, उतना ही ज्यादा वो आपको एक बहुत बड़ा एक इनकम क्रिएट कर सकता है. तो बेसिकली क्या है कि दैट इज नोन एज द आईपी. तो जैसे इंडिया में क्या है कि हमको पता है कि हम वी आर वेरी मच, क्या है कि हम काफी आगे हैं फर्दर इन आईटी सेक्टर. तो जितनी भी जो बड़ी जो कंट्री है, लाइक द जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर वेरी वेरी फार, हम वो काफी हमसे आगे हैं इन केस ऑफ द आईपी सेक्टर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेक्टर. तो चाहे वो यूएसए हो, चाहे आज के टाइम में चाइना में क्या होता है कि एवरी ईयर दे आर फाइलिंग अराउंड 15 लाख पेटेंट एप्लीकेशन, 15 लाख एवरी ईयर दे आर फाइलिंग. in USA they are filing around 8 lakh application every year. In India right now from this year we are filing 1 lakh application. So that is basically the, अभी हमारी स्कोप कहाँ तक है जाने का कि we can go for up to that level. अभी हमारे जो जितने जो कॉलेजेस हैं, जितने R&D जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they are not inventing basically. जितने भी जो चिप्स हैं, जितने भी हमारे जो फोन के या फिर लैपटॉप के जितने जो प्रोसेसर्स हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, they are not developed in India. जो भी हमारे पास में जो आपने अभी जो आपने देखा होगा अभी कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो जो फाइटर जेट्स हैं जैसे राफेल है, ठीक है, इसके जो राफेल के जो इंजन है बेसिकली इंडिया ने जो एससीए तेजस बनाया हुआ है, इसका जो इंजन है एससीए तेजस का, दैट इज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया. अभी हमने उस लेवल पे इनोवेशन नहीं कर पाए, एंड दैट इज बेसिकली हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम द जनरल इलेक्ट्रिक, दैट इज द कंपनी ऑफ यूएसए. तो उनका पेटेंट बेसिकली उस पे, तो हमको क्या है कि बहुत लार्ज मनी वो पे करना पड़ रहा है किस कंट्री को जिसे पेटेंट लिया हुआ है. तो बेसिकली हमको क्या, हमारी जो कंट्री में जो कंपनी है, उन्होंने अभी R&D पे उतना फोकस नहीं हो पाया कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो फोन में जो सैमसंग का है, आईफोन है, तो कोई भी कंपनी हमारे अपनी कंट्री का कोई ऐसा फोन नहीं है जिसका हमारा अपना ओन ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो हमको क्या है कि सैमसंग का है, कहाँ का है, साउथ कोरिया का है. जो एप्पल वो कहाँ का है, वो यूएसए का है. चाइना ने अपना डेवलप कर लिया, जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आई थिंक कुछ फोन्स आ रहे हैं आजकल जो कि हैं, तो जैसे कि आई थिंक वन प्लस है, तो उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, तो वो चाइना ने डेवलप कर लिया है. फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी इनोवेशन हुआ फ्रॉम द यूएसए. डीप सीक दैट इज इनोवेटेड बाय द चाइना, बट इंडिया में अभी अपना कोई एआई का टूल डेवलप नहीं हो पाया, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच फोकस्ड ऑन द इनोवेशन एंड इन्वेंशन. R&D पे हमारी कंपनी का फोकस नहीं है, बस मीन के स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं मार्केट में, बट स्टार्टअप्स का ऐसा नहीं कि हम वो इनोवेशन क्रिएट कर रहे हैं. हमारा वर्क क्या है,
कुछ लोग जो बहुत से स्टार्टअप्स आ रहे हैं पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, पैकेजिंग, ठीक है। बट उससे क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, बट क्या है कि जो एक इनोवेशन और इन्वेंशन से क्या है कि कंट्री को जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो नहीं मिल पा रहा है। और बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है कि इन केस ऑफ इफ यू आर गोइंग फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी आईपी काइंड ऑफ थिंग, अगर आपने टेक्नोलॉजी बना लिया, देन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। छोटा सा भी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो आपने देखा होगा कि जो कोक का बॉटल है उसका जो कैप होता है, तो फर्स्ट टाइम जिसने भी उस कैप को डेवलप किया था, दैट पर्सन, उसने बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जस्ट बाई जस्ट मीन क्या कि इन्वेंटिंग दैट कैप ऑफ द कोक बॉटल। बहुत सिंपल सा इन्वेंशन है, बट क्या है कि वो जितना भी सेल आउट हुआ इन 20 years आफ्टर द कॉमर्शलाइजेशन, उसको एक पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ही वॉज गेटिंग वर्ल्ड वाइड। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द मीन्स क्या है कि आप अपने घर बैठे ही जहां पे कोई ऐसा माइग्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फॉरेन जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ दे आर क्रिएटिंग 3-4 IPs इन देयर लाइफ टाइम, उसका यूज कर वो अगर मार्केट में बहुत बेनिफिशियल है, तो क्या है कि बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म तो है ही आज के टाइम में। इजिली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत से जहां पे आपको सेल कर सकते हो, आप घर बैठ करके यू कैन अर्न मिलियंस बिलियंस। ओके, तो हमको जस्ट मीन क्या है कि बेसिकली इसका ये पर्पस क्या है कि वी हैव टू बी द जॉब क्रिएटर्स रादर देन बी द जॉब सीकर्स। हमको जॉब क्रिएट करना है बाय द इन्वेंशन। अगर हम ये क्रिएटिविटी लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, तो हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे। जो मीन्स क्या है कि हमको जॉब सीकर नहीं बनना है, रादर देन बी द जॉब सीकर, कि हमको जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा कहीं पे, जॉब आप डेवलप कर सकते हो। ओके, दैट इज द होल प्रोसेस, होल बेसिकली द कहते हैं टारगेट ऑफ दिस होल प्रोग्राम ऑफ द आईपी ऑफ द नीपम। दैट इज द होल बेसिक टारगेट and purpose of this program. Okay, thank you, thank you very much. Thank you so much, Mr. Alok sir. I mean, that was really a wonderful session, sir. You have everything, I think, each and every information related to the patent. And we can take some questions. Only 5 minutes are there, so you can ask any query to Mr. Alok. You can ask. सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर, ये मुझे बस एक चीज समझ नहीं आई, ये जो आपने ये जो वैशाली का जो बताया सर, मेरे को तो आई एम वंडरिंग कि हाउ कैन 6 year old गर्ल कैन फाइल ए पेटेंट। ये तो थोड़ा सा मतलब Anyone वो can go for the filing. वो मे भी फैमिली से आपको हेल्प मिले, आपके हाँ स्कूल से मिले, कहीं से मिले, बट क्या है कि वो नाम का हो गया होगा। नेम तो है, ठीक है, बट वो मैं ऐसा हो सकता है कि उसने खुद से भी इसका हाँ, सपोर्ट हो, बेसिक आइडिया उनका रहा होगा। हाँ सर, आइडिया कई उसका बार हो। बच्चे बहुत बेसिक Exactly. आइडियाज हाँ, देते हैं जो बेसिक काफी आइडिया काम के होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो जो आइडियाज होते हैं, जो भी जो क्रिएटिविटीज होती हैं, वो बच्चों में ही ज्यादा होती हैं। और होता जी क्या है कि फर्दर जैसे कि हम लोग क्या होता है कि इन्वायरमेंट का जैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हमको ये है कि ऐसा ही करो। अगर हमने उसको गाइड किया नहीं आप ऐसा ही करो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जो बेसिक आइडियाज हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, बच्चे में आइडियाज बहुत होते हैं, ऐसा करने का, क्वेश्चन पूछने का कितना होता है कि मुझे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बहुत से क्वेश्चन आजकल बच्चे के बच्चे पूछते तो हैं। बड़े स्मार्ट हो गए सर। हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। दैट इज द मीन्स क्या है कि अगर आईपी हम ऐसे क्रिएट करते हैं, तो दैट विल बी वो क्या है कि बहुत हेल्पफुल होगा। जो कि हमारा नेक्स्ट जो प्लान है कि इन नेक्स्ट 25 year अप टू 2047 वी हैव टू बी द डेवलप्ड कंट्री। सो आईपी दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड सेक्टर राइट नाउ इन इंडिया। Right, sir. So any more questions? Any questions, participants? You can click raise on hand. I will unmute you. Any questions? I think sir has described very beautifully. I don't think there is any questions left for asking. So एक छोटा सा मेरे मन में एक छोटा सा डाउट था। आपने वो भारती का बताया, जो राजस्थान का एक बच्चा था जिसने चेस, सर तो चेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पर वो टू नहीं, प्लेयर उसने गेम जो था, डेवलप किया सिक्स पर प्लेयर, उसने सिक्स सिक्स प्लेयर प्लेयर। बनाया। तो हाँ, सर फिर उसे पेटेंट कहेंगे या उसे नहीं वो डिजाइन डिजाइन, ये डिजाइन कहेंगे? का पार्ट है, वो पेटेंट भी नहीं है, डिजाइन वो कहेंगे, डिजाइन का हाँ पार्ट है, वो जी पार्ट जी, ऑफ डिजाइन। डिजाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। yes, Aarti ji, you can unmute. Aarti Gupta. Thank you so much. Uh, thank you for the informative session. It will be great अगर अपना email ID सर ये शेयर कर दें, ताकि लाइक अभी जो हम केसेस वगैरह कर रहे हैं
don't know मैडम कि अगर मैडम ये कुछ ऐसा करवा पेटेंट दूंगा, डोंट वरी, आपके कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है थोड़ी वहाँ पे, डोंट वरी. I will send the PPT, ma'am. I will Yes. send. I will share. So just share with me. I will share the topic. So any more questions? Any more questions related to this session? So thank you so much, sir. Thank you so much, Mr. Alok, sir. I will definitely call you to take some patents. Okay, sir. No I problem. will take Sure. your help for the design patents, and we will talk, sir. And I will take your help in future also. In our future programs, we will definitely invite you in person also, sir. And thank you so much, sir, once again on behalf of Inspira Research Association and Shri Tagore College, Kuchaman City, and KCCS College of Engineering and Technology, Yalgaon. Thank you so much, and all the participants, thank you so much for joining this session. Thank you so much, Dr. Aarti ma'am, Dr. P.S. Chauhan sir, Mr. Alok Mishra sir, once again. And we will Thank you, meet sir. Thank you very tomorrow. much for inviting me in this Thank session. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Thank you. So tomorrow is the 6th day on the topic statistical analysis using Excel by Dr. Chanchla Technical Jain. issue? Yes, sir. Thank you so much. By Dr. Chanchla Jain, research expert and assistant professor, Prestige Institute of Management and Research, Indore. So we will meet tomorrow at the same time. Tomorrow we will start at 5 p.m. and we can say that tomorrow is the last session of the presentations. And day after tomorrow, we will send an assignment to you. You have to submit it for the certificates, and we will issue the certificates within 2-3 days. So, Dr. Aarti, thank you so much. Dr. Chauhan Saab, thank you everyone. Thank you so much.